So welcome everybody. Welcome to this very important session that we are going to conduct today on the event of birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. We are going to conduct this lesson today. The important contributions of Subhash Chandra Bose, we are going to cover them. We are going to also study about Azad Hind Government. हम आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं. So today we are going to conduct this very special class, and these special classes are conducted on Unacademy Plus. You can log on to Unacademy's learning app and you can participate in these free sessions. तो आप Unacademy के learning app पर मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हो. This is my profile on the Unacademy's learning app. And there you will be getting all the free special classes. आपको ना सारी free special classes मिल जाएंगी वहाँ पर, which are conducted live. And recently I have covered governance crash course. I have also covered ancient Indian history, modern Indian history crash courses. I have also covered class 11th geography NCERT. और मैंने cover किया है. I have also covered the. I am also right now covering. मैं अभी cover कर रही हूँ the environment and ecology NCERT. Okay, not just NCERTs, but I am also covering the static books. Okay, मैं static books भी cover कर रही हूँ आपके NCERTs में से. ठीक है, NCERTs के अलावा static books मतलब शंकर IAS. So you can participate in all my live classes which are conducted on Unacademy Plus. Also, before we start this session, there is a small announcement for all of you that Unacademy has launched the iconic subscription. Now, what is there in the iconic subscription? Then in the iconic subscription, you will be getting a personal coach. इस iconic subscription की खासियत क्या है कि यहाँ पर ना आपको एक personal coach मिलने वाला है इस iconic subscription में. You will be getting mains question and answer practice, study planner, expert guideline. So your personal coach will give you one-on-one guidance sessions. आपको prelim से interview तक ना one-on-one guidance sessions मिलेंगे. Study planner दिया जाएगा. You will be given expert guidelines and also bi-weekly reviews होंगी, यानी कि आपके progress को highlight करने के लिए आपके bi-weekly reviews भी हुआ करेंगे to check if you are going on the correct path or not. Okay, so the prices are increasing from 25th of Jan. 25 जनवरी से ना प्राइस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. You can use this code Sharma20 to get your 10% discount also. ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो कोड Sharma20 so that you will be in a position to avail this 10% off on your iconic subscription. I've given you the link also in the comment section down below. Okay, चलो, so let's start the session. Session शुरू करते हैं without any delay. So now, why Netaji Subhash Chandra Bose is in news? We know that he is one of the most iconic personality. हम जानते हैं कि काफी आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं आपके सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम बहुत प्यार से नेताजी भी बोलते हैं. We call him नेताजी also, right? Because he was a leader, true sense. In true sense, he was a leader. ठीक है, रियलिटी में अगर देखें तो yes, वो एक बहुत ही सेलिब्रेटेड लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे. ठीक है, एंड इन विच ईयर डिड ही अर्न दिस टाइटल ऑफ नेताजी? कौन से ईयर में, कौन से सन में इनको ये टाइटल दिया गया नेताजी का? इट वॉज इन 1942 that he earned this title Netaji, that too in Germany by the Indian soldiers of the Azad Hind Fauj. Okay, Azad Hind Fauj के जो भारतीय सोल्जर्स थे, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये टाइटल दिया नेताजी का 1942 में. Now मैंने वही पॉइंट्स आपके यहाँ पर बताए हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं. ठीक है, so he was given this title by the in Germany. Now he was one of the most celebrated freedom fighters, as we all know, and he was also a person who cleared the Indian civil service, not Indian, the British civil services examination. जो ICS का एग्जाम हुआ करता था सिविल सर्विसेज का, वो इन्होंने क्लियर किया था. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? 1920s के आसपास. ठीक है, he cleared this exam. So, आपको पता है कि ये जो एग्जाम है ये अभी ही थोड़ा टफ है. उस टाइम पर तो ब्रिटिशर्स पूरी कोशिश करते थे कि कोई भारतीय इस एग्जाम को पास ना कर सके, बट नेताजी ने ये एग्जाम क्लियर करके ब्रिटिशर्स को भी दिखा दिया कि भारतीय किसी से कम नहीं है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे, Bose is credited with the very famous slogan, "Give me blood and I shall give you freedom." यानी कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा.
ये क्या किसने दिया था ये स्लोगन दिया था नेताजी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। प्लस द स्लोगन ऑफ जय हिंद was also given by Netaji Subhash Chandra Bose. This is again very important. They will give you the slogans, then they will ask you which of the following freedom fighters gave the above slogan. आपको स्लोगन देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भैया इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने ये स्लोगन दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जय हिंद एंड गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये स्लोगन किसने दिया है? नेताजी ने दिया है, ठीक है। And he is also credited to be the first man to call Mahatma Gandhi father of the nation in his address from Singapore. Now this is a very very important line. Why? Because the thought process, the philosophy and the objectives of Netaji and Gandhi ji never matched. कभी भी इनके व्यू पॉइंट और गांधी जी के व्यू पॉइंट मिले नहीं। गांधी जी was more into non-violence, while Netaji was more into extremism. ठीक है, ये कहते थे कि भैया वायलेंस के साथ ही हम अपना हक हमें छीनना है, ठीक है, अपनी फ्रीडम हमको छीननी है, ठीक है, ये हम डिजर्व करते हैं। और गांधी जी का था कि हम बिना वायलेंस के अपनी फ्रीडम को लेकर आएंगे, विन बैक करेंगे, अर्न करेंगे, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे स्टिल both of them they had philosophical ideological differences but still they respected each other. दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, right? Mahatma Gandhi ji was known as father of the nation and he was the first man to call Mahatma Gandhi ji as the father of the nation. This is again important for prelims. ये भी आपके prelims के लिए point यहाँ पर important है, ये याद रखिएगा। So when did he take birth? He was born on 23rd of Jan 1897. ईयर याद रखिएगा और डेट तो आपको याद रहेगा ही। टुडे इज 23rd Jan, so today is his birth anniversary. आज के दिन इनकी birth anniversary है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में जो कि आजकल न्यूज में है। इन 2021 यानी कि इन दिस ईयर ओनली our government has decided to celebrate Netaji's birth anniversary as पराक्रम दिवस। पराक्रम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स करेज, ये आपका शौर्य, ठीक है। शौर्य को हम बोलते हैं पराक्रम। सभी को बात समझ आ गई? शौर्य इज ऑल्सो नोन एज पराक्रम, सो इट ऑल्सो मीन्स करेज। So today is also the पराक्रम दिवस। As we all know, नेताजी is known by his courageous behavior. हम नेताजी को उनकी courageous behavior और attitude की वजह से ही जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेताजी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन आज के दिन को 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो देखो बर्थ की बात तो हो गई, बट अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ तो अभी भी एक मिस्ट्री ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो इनकी डेथ है उस पर पुख्ता सबूत नहीं मिले कि इनकी डेथ हुई भी थी या नहीं। इट्स अ बिग मिस्ट्री एंड हिज फैमिली आल्सो इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। कितना समय हो गया अभी तक ये मिस्ट्री सुलझी नहीं है। 70 से ऊपर साल तो भारत को आजादी मिलेगी हो गई, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, पराक्रम दिवस करेज डे होता है इसका मतलब। एंड टुडे दैट इज द 125th बर्थ एनिवर्सरी। आज 2021 को इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। अब आपसे मिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू मिस्ट्री रिगार्डिंग हिज डेथ, राइट, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट कैन बी द क्वेश्चन? Elaborate the role of Subhash Chandra Bose in India's struggle for independence. इनका रोल क्या था, इनकी भूमिका क्या थी? What was his contribution to the India's struggle for independence? That will be asked. So when this question is asked in GS paper 1, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका GS पेपर 1 में पूछा जाता है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? How you are going to introduce your answer? First you are going to introduce Subhash Chandra Bose. सबसे पहले आप सुभाष चंद्र बोस जी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वी ऑल नो दैट सुभाष चंद्र बोस ही वाज अ प्रोमिनेंट फिगर, ठीक है। ये कौन थे? एक प्रोमिनेंट फिगर थे, बहुत ही जाने माने फिगर थे। ही वाज जननायक, लोगों के नायक थे ये। ही वाज द लीडर ऑफ ऑल, राइट। सो ही वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, बट ही वाज नॉट ओनली एन एफिशिएंट लीडर। ये सिर्फ एक एफिशिएंट लीडर नहीं थे, he is also remembered to have been played the role of a very aggressive and active figure in the India's freedom struggle. इनका जो लीडरशिप था ना, वो सिर्फ थियरी नहीं था, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, बल्कि हाईली मोटिवेटिंग भी था। ये अपनी बातों से, अपने शब्दों से
लोगों को मोटिवेट कर देते थे, बिल्कुल एकदम बूस्ट अप कर देते थे, पंप अप कर देते थे. So he was not just an extremist, सिर्फ ये extremist नहीं थे, but he was one of the most capable, most able, motivating person as well. Okay, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. तो इनका रोल पढ़ लेते हैं. वी हैव गिवन एन इंट्रोडक्शन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रोल. नाउ रोल्स आर ऑन डिफरेंट लेवल. पहला तो आपका पॉलिटिकल रोल हो जाता है, बिकॉज ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर आल्सो. सो फर्स्ट वी हैव द पॉलिटिकल लीडरशिप, द रोल ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर. वी नो सिंस द 1930s हिज रोल, पॉलिटिकल रोल इंक्रीज्ड. 1930 से इनका जो पॉलिटिकल रोल था वो काफी बड़ा था. He was also jailed in 1921 to 22 because of his political activities and political involvement only. And we all know that he cleared the civil services examination also. इन्होंने civil services examination भी clear किया हुआ है. And after clearing it, he left the examination, the position. He resigned from the position. It was just to show the Britishers that we Indians, we are, equal or maybe more than, ठीक है, more than the Europeans, more clever than the Europeans, more than in terms of what? In terms of mind. अगर हम mind की तरफ से देखें, mind के perspective से सोचें, तो भारतीय यूरोपियन से कुछ कम नहीं है. ठीक है, we can also give them equal battle, equal challenge हम दे सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं उनको. ठीक है. Now when he was jailed because of his political activities, immediately upon his release, he organized all Bengal Young Men's Conference. This point is very important for prelims. I hope you are noting them down. मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे जो स्निपेट्स हैं आप इसको नोट डाउन कर रहे हो. ठीक है, तो दे कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स, हु इज द पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड द ऑल बंगाल यंग मेंस कॉन्फ्रेंस. कौन था जिसने ऑल बंगाल यंग मेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया? इट वाज सुभाष चंद्र बोस जी. ओके, एंड ही वाज आल्सो इलेक्टेड ट्वाइस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो आप बोलोगे अगर हम प्राइम मिनिस्टरशिप के दावेदार की बात करें तो नेताजी भी काफी बढ़िया दावेदार थे. ठीक है, प्राइम मिनिस्टरशिप की पोजीशन के लिए. He also established a separate political party, the All India Forward Bloc. तो ये All India Forward Bloc जो है ये किसने एस्टैब्लिश किया था? It was नेताजी's initiative. ये भी नेताजी का ही इनिशिएटिव था. ठीक है, एंड थ्रू दीज पॉलिटिकल स्टेप्स व्हाट वाज ही डूइंग? इन सभी पॉलिटिकल स्टेप्स के थ्रू ही क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल, यूनाइट पीपल, कलेक्ट देम एंड गैदर देम टुगेदर इन ऑर्डर टू लॉन्च अ बिग बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. वो लोगों को ना मोटिवेट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट संगठित कर रहे थे लोगों को. ठीक है, और इनके पूरे पॉलिटिकल करियर में थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल जर्नी हिज मेन फोकस वाज, मेन इनका एम क्या था? टू गेन इंडियाज लिबरेशन बैक, टू विन बैक आवर फ्रीडम. अपनी आजादी को वापस जीत लेना, ये इनका फोरमोस्ट गोल था. ये याद रखिएगा. लोगों का पॉलिटिक्स में अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, बट इनका इंटरेस्ट था लोगों को आजादी दिलाना. ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट रोल, पॉलिटिकल लीडरशिप. सेकंड रोल क्या है? वर्क विद अदर नेशंस. So the students who have just now joined the class, we are solving this question. Okay, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है क्लास, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Elaborate role of Subhash Chandra Bose in India's struggle for independence. Okay, चलो. Now the second important role was work with other nations. Now his why he is known as a magnificent, a very prominent leader? क्योंकि ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे, ये बाहर से भी सपोर्ट ला रहे थे. He was bringing in support in our freedom struggle from outside as well. He was working with German and Japanese also. He was trying to win their support as well. So he worked tirelessly to secure German and Japanese support in freeing his beloved homeland of foreign rule. We know that both Germany and Japan, they were not in good terms with Britain. That is why very cleverly Bose ji what he thought that I should take their support, I should take their help. देखो, अगर दुश्मन का जो दुश्मन है वो अपना तो दोस्त होता है ना. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. तो यही जो रोल है, यही जो बात है, ये नेताजी ने यूज की थी. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद गवर्नमेंट, these were the two important organizations that were formed by, you can say groups that were formed by Netaji. So we have Indian National Army which is also known as INA, जिसको हम INA भी बोलते हैं. In July 1943 in Singapore with the help of Japanese, जापान के लोगों की मदद से सिंगापुर में इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया इंडियन नेशनल आर्मी को. He reorganized INA and he relaunched INA with the help of Japan. जापान की मदद से. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जल्दी से बताएं. If the point is clear, let me know. तो यहाँ पर आप देखेंगे you have to
Remember over here, आपको एक बात याद रखना है that INA was launched with whose support? INA was revived with whose support? It was revived by the support of Japan. ठीक है. Now coming towards आजाद हिंद गवर्नमेंट. अब जब हम बात करते हैं आजाद हिंद गवर्नमेंट की, प्लीज राइट इट डाउन. जब हम बात करते हैं आजाद हिंद गवर्नमेंट की, we know that आजाद हिंद गवर्नमेंट was formed on which date? 21st of October. ठीक है. अब 2021 21st ऑफ अक्टूबर को, ठीक है, हम इसकी 77th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं. ठीक है. ऑन 21st October 2021 we will be celebrating the 77th एनिवर्सरी ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट. अब ये जो गवर्नमेंट है ये 1943 में लॉन्च की गई थी. It was launched in 1943 as you can see over here with Japanese monetary, political, diplomatic एंड ऑल्सो मिलिट्री असिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर भी जापान ने हमारी मदद की थी. ओवर हियर ऑल्सो जापान हेल्प अस. ठीक है. इन द INA ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो जापान हेल्प अस टू establish, revive it, and even in the Azad Hind government also the monetary support, financial support, economic, political, diplomatic support, even the military help was provided to us by Japan and it was established by Netaji. ठीक है. तो आजाद हिंद गवर्नमेंट को तब उन्होंने स्टैब्लिश किया जब भारत से उनको एग्जाइल यानी कि निकाल दिया था. ठीक है. यहाँ से भाग कर, यहाँ से निकल कर जब उनको ब्रिटिशर्स ने निकाल दिया क्योंकि यहाँ उनकी एक्टिविटीज काफी अग्रेसिव थी, तो जापान में जाकर इन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया. ठीक है. ही लॉन्च्ड दिस गवर्नमेंट. दिस इज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय नेताजी, राइट, टू विन बैक द फ्रीडम फॉर इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स की क्लचेस से वापस जीतने के लिए फ्रीडम को. तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है that under the, write it down, under the provisional government, the Azad Hind government, under the provisional government, who was the head? तो अगर हम बात करें जो नेताजी थे यानी कि सुभाष चंद्र बोस थे, he was the head of the state. इनको हेड बनाया गया. ठीक है. he was the head of the state. He was also the Prime Minister of Azad Hind government. आजाद हिंद गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी थे. And he was also the Minister of War and Foreign Affairs. ठीक है. In the Azad Hind government, which was a provisional government, Netaji was the head of state, Prime Minister, Minister of War and Foreign Affairs. ठीक है. This was his portfolio. Now next we have Captain Lakshmi. अब हमारे पास आती है Captain Lakshmi. Now Captain Lakshmi was the head of, write it down, head of the women organization. ठीक है. जो women organization थी आजाद हिंद फौज में, उसकी हेड थी कैप्टन लक्ष्मी. Then we have S.A. अय्यर. उसके बाद हमारे पास आते हैं S.A. अय्यर. He was the head of publicity and propaganda wing. यानी कि इसकी जो पब्लिसिटी कराई गई आजाद हिंद गवर्नमेंट की, उसके हेड कौन थे? S.A. अय्यर. पब्लिसिटी एंड, राइट इट डाउन, प्रोपेगेंडा विंग. ठीक है. तो पब्लिसिटी के यानी कि आप बोल सकते हो इसके जिस प्रचार हुआ इसका, ठीक है, प्रमोट किया गया, प्रमोशन हुआ, उसके हेड थे S.A. अय्यर. ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट हेड इज नोन एज, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, राज बिहारी बोस. नेक्स्ट अपने हेड थे राज बिहारी बोस. ही वाज द सुप्रीम एडवाइजर. ये कौन थे? इनकी पोजीशन थी एडवाइजर की. द टॉप एडवाइजर, द सुप्रीम एडवाइजर वाज राज बिहारी बोस. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो जल्दी से बताएं. If the point is clear, let me. Now the question is, when Azad Hind government was such, strategically organized, इसको इतना strategically organized किया गया, then why did it end? ये खत्म क्यों हुआ? Now we know that Netaji Subhash Chandra Bose was the supreme leader. ठीक है. इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के, आजाद हिंद गवर्नमेंट के सुप्रीम लीडर कौन थे? नेताजी ही थे. So when Netaji died, we saw the end of Azad Hind government also. And we all know in 1945 the Second World War also ended. ठीक है. एक्सेस पावर्स की डिफीट हो गई थी. तो उसी के चलते जब नेताजी की डेथ होती है बाद में, तो आजाद हिंद गवर्नमेंट की का वजूद जो है वो भी खत्म हो जाता है. ठीक है. तो आफ्टर द डेथ ऑफ नेताजी वाज द सुप्रीम लीडर, आजाद हिंद गवर्नमेंट आल्सो डाइड. ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो. सो ओवर हियर देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस जी, that he unfurled the tricolor, that is the flag, Indian flag, in Port Blair on 30th December 1943.
हमें आजादी मिली थी 1947, यानी कि 4 साल पहले इन्होंने जो झंडा है भारत का वो भी अनफर्ल किया था पोर्ट ब्लेयर में. ठीक है, he unfurled it. So Bose had arrived in Port Blair in the Andaman Nicobar Islands in 1943 after Japan handed them over to his Azad Hind government. Japan had captured the islands during the Second World War, and finally when Japan gave back the island, जो जापान ने कैप्चर किया था अंडमान आइलैंड, वापस जब जापान ने उस आइलैंड को दिया इंडियंस को, तो वहां पर जाकर नेताजी ने भारतीय झंडा जो है, तिरंगा जो है, वो फहराया था. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और इवेंट इन हिज लाइफ. इनकी लाइफ का ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है. तो यहाँ एक टाइमलाइन देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द टाइमलाइन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. ये जो टाइमलाइन है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 1919 जब हम बात करते हैं 1919 की, we know that Netaji Bose headed to London. Why did he go to London? In order to give the Indian Civil Services examination, in which he was selected in his first attempt. उस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में किसी इंडियन को एंट्री मिलना बहुत टफ था. इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल for an Indian to clear this exam at that time because Britishers intentionally wanted to fail them. And still, Netaji cleared this exam in his first attempt. अपने पहले attempt में he is one of the most motivating factor. ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही motivating factor है आप सभी के लिए. आप सभी UPSC की तैयारी कर रहे हो ना, तो इनसे थोड़ा सा हमें सीख लेनी चाहिए. ठीक है, तो उस टाइम पर तो कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं होते थे. देयर वर नो ऑनलाइन रिसोर्सेज एट दैट टाइम. कोई ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर है. देयर वाज नो कोचिंग सेंटर आल्सो. ठीक है, ही क्लियर्ड द एग्जाम इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, बट इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम ही रिजाइन्ड फ्रॉम इट because he believed he could not side with the Britishers, and he just wanted to show them that even the Indians can crack your examination. इनको बस ब्रिटिशर्स को दिखाना था कि देखो तुम समझते हो इंडियंस में कोई दम नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, बट इंडियंस तुम्हारे द्वारा रखे गए कोई भी एग्जाम, किसी भी चैलेंज को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, एक बस उनको प्रूव करना था, जो कि पॉइंट उन्होंने प्रूव कर दिया. Then in 1921 comes 1921, Bose worked under Chitranjan Das, who was a very powerful politician in Bengal. He worked as the editor for Das's newspaper Forward. ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ चुका है. प्लीज राइट इट डाउन, नोट इट डाउन प्लीज. ठीक है, चित्रांजन दास, he founded the newspaper called Forward, and in this newspaper, who was the editor? The editor was Netaji Subhash Chandra Bose. And later on, Netaji started his own newspaper called Swaraj. ये जो newspaper था, ये नेताजी ने ही start किया था. इसका नाम था स्वराज. Again, important for prelims. ये भी prelims के लिए काफी important है. ठीक है. Then in 1923, Bose was elected as the president of All India Youth Congress and secretary of Bengal State Congress. This is again very important. ये point मैंने यहाँ पर जो highlight किया है, ये आपके PYQ से लिया गया है. These points that we have highlighted have been taken from PYQs. Okay. Then coming towards the mid 1930s, देखो अभी तक तो ये क्या कर रहे हैं? ये अभी तक धीरे धीरे activities start कर रहे हैं. In his fight, he is starting the activities very gradually. The freedom fighting activities, right? By being the editor, by starting a newspaper, by resigning from civil services. But now his political activities started on a very large scale from the mid 1930s. When Bose he traveled in Europe, he researched and wrote the first part of his book, The Indian Struggle. Again, important point for prelims. The Indian Struggle is the book written by Subhash Chandra Bose. ठीक है. अब इंडियन स्ट्रगल में क्या कवर किया गया है? इन द इंडियन स्ट्रगल व्हाट हैज बीन कवर्ड? द इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम 1920s to 34. 1920 से 34, 14 साल का ये जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, ये कवर किया है इंडियन स्ट्रगल किताब में सुभाष चंद्र बोस जी. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. अब आता है आपका 1938 का पीरियड. नाउ वी विल हैव अ लुक एट 1938. After his return, Bose took over as the elected president of Indian National Congress. Right now he was in Europe. यहाँ पर आप देखोगे यूरोप में थी. Then he comes back to India. He gets elected as the president of Indian National Congress in 1938, Haripur, and he stood for unqualified Swaraj. What is unqualified Swaraj? Swaraj means self-governance. Unqualified Swaraj का मतलब क्या है? कि यहाँ पर हमें conditionless, हमें dominion status चाहिए ही नहीं तुम्हारा. Britishers were offering us dominion status. He said, I am standing for unqualified Swaraj. I want self-governance or nothing. मुझे तो सेल्फ गवर्नेंस चाहिए एट एनी कॉस्ट.
ठीक है। देन ओवर हियर यहाँ पर आप देखोगे 1939 का पीरियड आता है। बोस वाज री-इलेक्टेड इन 1939 बट ही रिजाइन्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में फिर से इलेक्ट किया गया इनको अगले साल, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया बिकॉज ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन पॉलिटिकल जर्नी बाय एस्टैब्लिशिंग ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पर हमने ये पहले भी पढ़ा है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, हु एस्टैब्लिश्ड द ऑल इंडिया द फॉरवर्ड ब्लॉक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश किया था। देन कम्स 1943, अब आता है 1943। ही ट्रैवल्ड टू जापान एंड टुक लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द ईस्ट एशिया। यानी कि ईस्ट एशिया से, बाकी नेशन से सपोर्ट लेकर वो भारत के नेशनल मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ही वांटेड टू मेक द इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट मोर स्ट्रॉन्गर by taking the support of the Japanese and the Germans. Okay, point clear होगा यहाँ तक सभी को? And so he formed INA and Azad Hind Fauj. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गए पॉइंट? तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, so this was the little snippet about नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में छोटे से स्निपेट्स इंफॉर्मेशन। हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन हम भुला नहीं सकते, वी कैन नेवर फॉरगेट हिज कंट्रीब्यूशन, राइट? हिज कंट्रीब्यूशन इज मार्क्ड विद इन गोल्डन वर्ड्स इन द बुक ऑफ हिस्ट्री, राइट? सो वी कैन जस्ट सल्यूट हिम एंड वी कैन थैंक हिम, एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड कि उस टाइम पर इन्होंने इतनी क्लियर कट नेशनलिज्म की भावना हमारे यूथ के दिलो दिमाग पर बैठाई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, सो स्टिल ही इज अ मोटिवेटिंग फिगर फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you everyone for participating in this session, and let us salute Netaji Subhash Chandra Bose for his contribution in the Indian struggle for freedom and independence. Thank you everyone for participating in the class. So do not forget to subscribe to Unacademy Plus, the iconic subscription today, because from 25th of Jan, the fees will be rising.